My name is Madhavi Menon. I am the author most recently of Infinite Variety, A History of Desire in India, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी भोपाल लिट फेस्ट के सेशन में. It is a book that talks about everyday realities of desire in the Indian subcontinent. And when I use that phrase, of course, this means कि India जो है, India ही नहीं है, India, Pakistan, Bangladesh, Burma, parts of Afghanistan, सब नेपाल, सब कुछ India था. So I'm going back many centuries, many traditions to think about how we think about desire. और मैंने उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो हम सोचते नहीं हैं डिज़ायर के रिलेटेड हैं, के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि बाल या मेकअप या एजुकेशन या लैंग्वेज, ग्रामर. लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट इस बुक में है कि ये सब सारी चीज़ें डिज़ायर के बारे में बताते हैं, हमारी डिज़ायर के बारे में बताते हैं, दूसरे लोगों के डिज़ायर के बारे में बताते हैं. And so I'm very clear in my book that desire doesn't only mean genital sexuality. When we think of sexuality, we think about two people having sex. That's not necessarily what I'm thinking of as desire. I'm thinking about all kinds of desire. For instance, how long we grow our hair, how short we keep our hair, what kind of grammar we use when we speak about tenses being, or verbs being masculine, feminine, neuter. So what do we mean by that? So all these ideas are part of the book. जो सेशन अभी हुआ था उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रेज हुआ था शबरीमला के बारे में, बिकॉज वन ऑफ माय चैप्टर्स इज़ ऑन अय्यप्पन, जो गॉड हैं शबरीमला में. और सम पीपल वर वेरी अपसेट कि ऑफ कोर्स आई सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कि women of menstruating age should be allowed into the temple. और थोड़े लोग ऑडियंस में ऑब्जेक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इट इज़ देयर फेथ, वाई शुड वी ऑब्जेक्ट, वाई शुड वी क्रिटिसाइज. इट्स इंटरेस्टिंग कि दो लोग जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया, एक औरत थी और एक मर्द थे. तो दिस इज़ नॉट अ जेंडर इशू, और ये मैं सबको बताती हूँ कि ये मेन वुमेन का बैटल नहीं है, ये है पैट्रियार्की का बैटल, विच इज़ टू से पैट्रियार्की इज़ अ सिस्टम in which men are considered inferior, men are considered superior, women are considered inferior, and lots of women also believe that. So it is not in both the people supporting the Supreme Court verdict and opposing it, you will find both men and women. तो ऐसे नहीं है कि men are one camp and women are one camp, हम सब mixed हैं इसमें. But my point about Sabrimala is that no one should be told whether they can or can't go into a temple. And certainly women should not be told that we are dirty, that we are polluted, that we are inferior. That cannot be a reason to keep women out. It is a question of feminism, it's a question of human rights, it's a question of decency for all of us. तो उसके बारे में थोड़ी controversy हुई, which is good, क्योंकि इन सारे चीज़ों को we should talk about it publicly. कि not sit in the house and think कि हमारे सर में thoughts think करें. We should have public conversations, which is why ऐसे lit fest जो है अभी भोपाल में first year है, ये बहुत ही बढ़िया है मेरे ख्याल में, to have these conversations, to allow people to converse. The point is not to agree कि I can disagree with anybody, anybody can disagree with me. The point is ये conversations होनी चाहिए, public में होनी चाहिए. So the more lit fest we have, the better. Last question about the book. हाँ जी. Idea कैसे आया इस तरह लिखने का? है ना? वो जरूर. तो मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था. मेरे जो एडिटर थे रवि सिंह, मैं न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में ऑप-एड आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ. तो उन्होंने एक दो पढ़े और मेरे पास आए और बोले इसका किताब तो बनना है. Because I write, I think out quite counterintuitively about desire and sexuality. I don't like sort of traditional views about gender, traditional views about sexuality. So he says you must write a book that is going to be a bit hatke, not the usual thing कि कामसूत्रा में क्या कहा था और मनुस्मृति में क्या कहा था. A little bit focusing on everyday people and how we can relate to it. So it was his idea that I was very reluctant to at first. मैंने कहा नहीं कर सकती मैं. But then I was so happy to write it. And I, and so I talked about many different things. But equally I could have talked about any number of other things. इस किताब में 10 और किताब हैं. I could have talked about saris, I could have talked about widows, I could have talked about water. इतने सारे चीज़ें हैं जो हमारी daily life के part हैं. And they all have a history of desire. So I hope other people will write these other books, because I think for now मैं rest करूँगी. Last question. हाँ जी. बुक लिखने के बाद में आपके उसमें क्या परिवर्तन है? आपका जो स्टेटस क्या चेंज हुआ? किस तरह आप सोचती हैं कि लोग आपके बारे में? वो मुझे नहीं पता, सवाल जवाब है ही नहीं मेरे पास. मुझे नहीं पता लोग कैसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, बिल्कुल नहीं, सीरियसली नहीं पता. तो पेड्स हैं,
उनका मोर इमीडिएट रिएक्शन आता है, लोग कहते हैं अच्छा है कि नहीं है। मैंने बोला था कि एक अय्यप्पन के बारे में मैंने जो लिखा था, किसी ने कहा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए कंप्लेंट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। सो किताब के बारे में अभी तक तो सारे रिव्यूज़ टचवुड अच्छी ही आई हैं, और सारा फीडबैक जो लिट फेस्ट और सेशंस में से आई हैं वो भी अच्छी आई हैं। दिस डजंट मीन कि पीपल डोंट डिसएग्री, बट पीपल हैव बीन इंटरेस्टेड एट लीस्ट। तो आई एम होपिंग कि दिस विल कंटिन्यू एंड द कॉन्वर्सेशंस विल कंटिन्यू, बट अदरवाइज स्टेटस में कुछ फ़र्क नहीं है वैसे। या